we were studying about methods of costing. Am I right? Yes, we were studying about these methods of pricing, na? Are you aware? Yes, sir. Yes. Okay, so in these methods of pricing, what we were doing, we were just trying to analyze our revenue. As a businessman, we need to understand my revenue level every year. Getting this? So on the basis of my expectations of the revenue, I need to decide my level of output. Level of output में यानी मेरा production level मुझे decide करनी है yearly. Then to decide that production level, what is my cost objectives and how much revenue I am going to recover every year from my product, that also I have to analyze. When you are going to decide your revenue analysis and when you are going to decide your when you are going to set your price of your product, you have to understand in which environment your organization is working, how much market area you have captured, and what is your nature of product, and what type of competition is there into the market, and what is the economy level of the consumer. By considering so many things, I need to decide price of my product. To decide the price of my product, first approach was cost plus or full cost pricing that we had studied in the last lecture, in previous lecture. So in cost plus approach, what we are doing, we are calculating final cost of production of the total cost of production, and by using addition of fixed cost and variable cost into the total cost of production, and then we will make plus of some margin whatever you are expecting. And I will also give the explanation towards my customer is like this and this is my total cost, in which I have added 20% of margin, so that total price or total selling price at your end will be so and so. So in this way, first I will first record all the costs incurred into these manufacturing activities, and by making the total of this cost, I will add some margin. That is about the cost plus approach. Now, second, we had studied about the marginal costing approach. In marginal costing approach, what was the objective? Is whatever is your total quantum, whatever is your total fixed cost, this has been recovered by making some level of units. So see, fixed cost is not going to change as per the level of activity, as per the production level, as per the extra production. Getting this? So if fixed cost is already recovered by earlier production, then what kind of cost we have to record? Only variable cost. So what is meant by fixed cost and variable cost? So fixed costs are fixed at all level of activity. Throughout the year, this fixed cost will not be changed. For example, I had given the example like rent charges. Then you have salary of the employees, salary of manager, then your insurance, then water bills, then administrative expenses, canteen expenses. These are the fixed costs. Getting this? So once we do the manufacturing activity, through this manufacturing activity, we will recover fixed cost as well as variable cost. Now, for example, your level of activity was 100 units, and for example, rent for that factory is 500 rupees, 5,000 rupees. Now, this 5,000 rupees as a rent, which is recovered through this 100 units. And if I produce 101 unit, 102 unit, 103rd unit, or 100 next 10 units, additional 10 units. Now, for this additional 10 units, so 5,000 rupees rent is recovered through 100 units. Now, if I wanted to produce additional 10 units at that time, in this additional 10 units, fixed cost will not be recovered because fixed cost is already recovered through 100 units. Getting this? Now, on additional or on extra 10 units, which cost will be applicable? Only variable cost. Only variable cost means what? Cost of raw material, cost of direct labor, and cost of that electricity, power, then oil, grease. इसके सिर्फ additional cost जितने भी होंगे, variable cost उतने ही होंगे, वही हम लोग क्या करेंगे?
recover करें. Getting this? Because fixed cost means what? Uh, where you have manufactured this additional 10 units in the same factory, but whose rent is already recovered through these 100 units. So whenever you are going to produce extra units at that time, you will not charge fixed cost because it is already charged on existing units. That's why you will charge only marginal cost. So marginal cost is nothing but cost of extra unit. So variable cost of extra unit you will charge, and accordingly you will set the prices. Getting this? This is something about marginal cost in price. Yes, students, tell me. Yes, sir. Okay. So first one was about total fixed cost, that is the total cost plus price. Sorry, first one was the cost plus or full cost pricing. Second one was regarding to you have to set your marginal cost. Marginal cost is nothing but cost of extra unit. Okay, that also we had studied in the last lecture. The next one is the cyclical pricing. So in cycle, this is also we had studied in the last lecture. In cyclical pricing means what? Your organization goes through various stages. For example, recession, depression, recovery, and prosperity. So these are the four stages of your business cycle. So as per the business cycle, which phase you are suffering from, so accordingly, you can make the ups and downs in the prices. That is that is something about cyclical price. This in this case, I'm not considering, a total cost. I'm not considering the marginal cost. What I'm considering the economic condition of industries and economic condition of a country. So by considering these things, if my organization is going through the recession phase, at that time my pricing policy will be different. If I am in so much of depression because so much competition is there, getting this, there is the demand to your product, but customers are not moving towards my product. Getting this? So this is something about if your company is in depression phase, at that time also your pricing policy will not be set to attract the customer, because you anyway anyhow you have to generate the profit, because it gives you survival support. Getting this? If you don't generate the profit through sales, that time you have to wind up. Getting this? To survive in this competitive world during the stages of recession and depression, you have to make the adjustment into your prices. You have to set your pricing policies. Getting this? As well as at the time of recovery. Recovery means what? My product is at mature stage. Product is at declining stage, and on the basis of this, I wanted to recover whatever cost I have been done. My product is just at the entry level. At that time, within how many products you wanted to recover your total cost? Try to understand. So whether your organization is in recession phase, depression phase, or recovery phase on prosperity, where you are getting high demand into the market. So you are having your product is having huge demand in the market. That is something about prosperity. Recovery means what? You are at the initial stage and you just wanted to recover whatever expenses you have done as early as possible, within 3 months, within 4 months, within 5 months, or within 6 months. Till the time your competitor has not entered into the market, till the time you wanted to recover your investment, as well as you wanted to earn the profit. Getting this time period you have to decide, accordingly you will decide your price. कितना फास्ट आपको आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट का रिकवरी करना है. Getting this? And prosperity means what? You have long term business. No any customer competitor is going to enter into this market. No any competitor will enter into the market. That's why entire market is yours. खुद सारा market आपका ही है कुछ दिन के. So accordingly, you will decide the prices of your product. That was something about cyclical pricing. Means what?
my prices will be not same throughout the year. My prices will not change as per the period, but my prices will change as per the business conditions or business situations. Getting this? That is something about your cyclical pricing. So all the organization, it may be service industry, it may be automobile industry, pharmaceutical industry, or any kind of manufacturing industry, they would have to understand the phase of the business. कौन से फेज से मेरा बिजनेस जा रहा है और कितना कंपटीशन मार्केट में. Getting this? So by understanding this, I will adjust my price. I will set my price. That is the pricing policy under cyclical pricing. तो डिक्लाइन में कैसा रहेगा? इमर्जिंग स्टेज पे मेरा प्राइसिंग पॉलिसी कैसा रहेगा? दैट आई हैव टू डिसाइड. Getting this? So while studying this, I need to understand the microeconomic parameters as well as macroeconomic parameters, and I will decide the price. That also we had studied in the last day. Okay. Now, the fourth pricing strategy is the penetration price. अभी पेनिट्रेशन मार्क, इसमें हम लोगों ने क्या देखा फर्स्ट स्लाइड में? साइक्लिकल प्राइसिंग में हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू सेट द प्राइस as per the conditions or as per the situations of the business. Now in penetration pricing में क्या है? This is the marketing strategy used by the business to attract the customer to the new product. Means what, you are very new into the market, you wanted to launch the product into the market. For example, Reliance Jio initial stage, free data, free messages, free calls. Getting this? So to attract the customers, to break the customers of my competitors, I'm entering my new product into the market. I'm entering newly into the market. At that time, I will keep lower price, or I will keep low prices of the product. And so in penetration pricing, what I will do first is that I will be very new into the market. Second, my competitors, my market is entirely set. It is very difficult to break the market, existing market. जिस एरिया से, जिस एरिया का मार्केट टोटली फिक्स है, सेट है, उसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं है मेरे. Getting this? And being a new into the market, it will be difficult to attract customers towards my product. At that time, I can use the penetrating price. So whenever we are going to decide the initial penetrating pricing, at that time, I must keep my prices at very less. And my prices will be very low prices. And along with these prices, we will be giving some of the offers. This will be initial offers to make the customer aware about the product. मेरे कस्टमर, मेरे प्रोडक्ट का अवेयरनेस जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा. प्रोडक्ट लॉन्च करते समय आई एम न्यू इनटू द मार्केट, नो आइडिया अबाउट द बिजनेस, and wherever it is possible, I will keep price as low as possible. Means what? I will just only recover the total cost of the product, and that is something about penetration. So in penetration, what you are doing? We will entering in newly into the market. First thing is that you are entering newly into the market. Now to attract the customers, your prices will be very less. There will be huge gap between your prices and your customers prices, your competitors prices. दोनों में बहुत गैप है और मेरे prices बहुत ही low. Then market penetration policies relies on the strategy of low prices initially and make wider number of customer aware through the new product. So whenever you wanted to enter newly into the market, at that time prices will be less, and your objective is not to generate the profit. आपका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है. आपका मकसद क्या है? अवेयरनेस जनरेट करना. मेरा प्रोडक्ट का अवेयरनेस मार्केट में करना, यही मेरा ऑब्जेक्टिव. Getting this? Now, the goal of penetration pricing is invite customers to try to for the new brand. New brand का try करना जरूरी है. जब वो try करेगा तभी उसको पता चल जाएगा कि उसका क्वालिटी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है. And to invite the customers to try to new product and build market share, to generate the market share.
ये हम लोग करते हैं, and for this your prices will be at a very normal level. Prices कम है. Penetration pricing comes with the risk that new customers may choose brand initially. But prices, if there is the increase in the prices, what they will do, they will switch once again to the competitors. Means what? Whenever you wanted to enter newly into the market, that time customers, due to having the huge gap between your price and your competitor's price, customer may shift towards your product for certain times. And when you increase your prices, at that time again customer will move towards their original brands. It may happen in penetration pricing. This pricing strategy is generally used by the new entrant into the market. जो नए मार्केट में कंपनीज आती है उनको पेनिट्रेशन प्राइसिंग ही करना जरूरी है. गेटिंग दिस. अभी इसका पेनिट्रेशन प्राइसेस के गोल्स क्या है देखिए. So it is common for new entry and to get quick market share. Immediately market share लाने के लिए मुझे ये करना जरूरी है. And price is one of the easiest way to differentiate between new entrant from the existing market player. So what will affect more on the customers, that is the price. Whenever customer will purchase the price, at that time he will compare this new entrant product as well as competitors product. Wherever he is going to save certain amount, accordingly he will move towards the product. Means or to generate the awareness, to capture the market and not to generate the revenue, this penetrating pricing will be adapted. इसको गोल क्या है देखिए. ब्रांड लॉयल्टी जनरेट करना, टू कैप्चर द मार्केट शेयर, टू जनरेट द ब्रांड लॉयल्टी, टू स्विच कस्टमर्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर से मेरे पास कस्टमर को स्विच करने के लिए मैं यूज करता. टू जनरेट द सिग्निफिकेंट डिमांड लुकिंग टू यूटिलाइज इकोनॉमी ऑफ द स्केल. इतना इसका मतलब जितना मेरा कॉस्ट है उतना रिकवर करने के लिए उतना ही है. मींस व्हाट, आई एम नॉट जनरेटिंग द प्रॉफिट राइट नाउ up to certain period. For next 3 months, 5 months, 6 months, I will not focus on the profit. My focus is to capture the market. Okay, so that this will help us to generate the awareness. So this was something about penetration pricing. Next fifth pricing strategy is the price leadership. Now, whenever you were deciding the price leadership, at that time you need to know that in which market I am there. Whether I am in monopoly, whether I am in oligopoly, or whether I am in perfect competition, or whether I am in monopolistic competition. Getting this? What kind of business I am doing? What kind of business I am doing, and how much market I have kept. So on that basis, I will use this price leadership. Price leadership means what? This is not your perfect competition. कंपनी या आपका मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं है, and there are very less few number of people are there who are doing the similar business, and entire market is captured by 3 or 4 players. सारा मार्केट उन्हीं के ही हाथ में. Getting this? And there is no possibility to enter new competitors into this market. At that time, whatever price will be decided, this price will be decided by only these few players. ये few players we decide करेंगे price. So here you will have a leader in the price decide. So see, it is the strategy by which an organization create the situation to influence the price of the services or products in the market. अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ प्राइस डिसाइड की रहेगी, बाकी वाले 3-4 ऑर्गेनाइजेशन को, बाकी यानी रिलायंस जियो जो कुछ सेट प्राइस करेंगे, वही प्राइस आइडिया वोडाफोन को भी क्या करना पड़ेगा, एयरटेल को भी फॉलो करने पड़ेंगे. मीन्स व्हाट इन दिस केस, being a leader, being a leader into the market, you have captured almost highest market as with respect to your competitors. जितने भी 3-4 कॉम्पिटिटर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है, then you have Idea, Vodafone and Airtel. Getting this? So these are very few players into the market, and entire market is captured by 3 or 4 players. Getting this?
So where this price leadership is applicable, wherever there are when very few number of players. Okay, so 3-4 players हैं, and out of these 3-4 players, one player will be very dominant, very dominant. For example, Reliance Jio. So that Reliance Jio will take the leadership to decide the prices of the product. And whatever price range they have been decided, Reliance Jio has been decided. Rest of the players like Airtel, Vodafone, Idea, they have to set up their price with respect to these prices of Reliance. If there is the increase in the prices of Reliance Jio, in the same manner, Idea Vodafone will increases the prices. If there is the decrease in the prices of Reliance Jio products, then rest of the companies, rest of the competitors will also reduce their prices. Getting this? Means on being a leader of the market, you got opportunity to decide the price, to take the leadership in the price. That is something about price leadership. Okay. The price leadership model is commonly seen in the oligopolistic markets such as airlines, Mahavitran, or any kind of such organizations who has got entire market capture. So number of competitors are very less, 3, 4, and entire market is captured by these companies. So for example, airlines companies, or you have telecom industries, you have textile industries, you have some of the steel industries where few number of custom competitors are there, and out of these few number of competitors, as per the my market share, I will decide, I will take the lead of price leader. So this one of the advantage of price leadership is that it forces the competition to rethink about the strategies, compete with the price set by the dominant organization. Dominant organization उसमें से 4 कंपनी से who is the dominant, तो उसके प्राइसेस देख के मुझे आई हैव टू रीथिंक अबाउट माय प्राइसेस. अगर मैंने प्राइस उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं किए तो क्या हो जाएगा, कस्टमर वो फॉर एग्जांपल जियो का 3 महीने का प्लान अगर 500 रुपीज में आता है अनलिमिटेड, और आइडिया वोडाफोन का प्लान 700 रुपीज को आता है 3 महीने, so where customer will go towards the Reliance. Getting this? So if the pricing strategy is like this, agar if there is the huge gap between my leader's price and my price, at that time my customer will be moved towards the my competitor. So as whatever prices decided by the Reliance Jio, the same with the same prices as an idea as a Vodafone, I have to rethink about my strategies. Okay, means every time whenever you wanted to make the fluctuations into your prices, you have to look towards the leader who is in the market, and with respect to the prices decided by the leader, you can increase the prices or you can adjust your prices. Getting this? And it is possible only in case of oligopolistic market. Oligopolistic market yani only few partners are there, only few people are there who are doing this business, and entire capture is in the hand, entire market is in the hand of these few people. जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसके बाद योर एयरलाइन इंडस्ट्री है, then transportation industry hai, steel industry is there. Means what, you are not produce a regular product like sugar, like oil, like uh, जैसे कि रेगुलर प्रोडक्ट लगते हैं ना, वो प्रोडक्ट छोड़ के हम लोग कुछ नया कुछ अलग बना है, एट दैट टाइम दिस विल बी हैविंग प्राइस लीडरशिप. So this was the fifth pricing strategies. Now I think we had seen I think we had seen this as well. Okay, so this was something about price leadership, and we had discussed about this case of Reliance Jio. So this is the case where initially what was happened, Reliance Jio ने prices कम कर दिया, attract कर दिया customer, and now Reliance Jio is deciding the taking the advantage of price leadership. So
all the textile, all the telecommunication industries are adjusting their prices with respect to Reliance Industries. So this was something about the price leadership. Okay, ये already हम लोगों ने देखा था शायद. Okay, now next one is the price skimming. ये नहीं देखा था हम लोगों ने शायद. Price skimming. अभी price skimming क्या है देखिए. See, I will tell you one example. So price skimming is that you are manufacturing such a product which is right now not there into the market, which is right now not there into the market, and there is no possibility that your customer will also prepare the same product in the future up to 1 year or up to 2 years. So you are very new into the market and customer has no option to purchase the price other than my product. At that time, what I will do, I will skim the market. I will skim the market means what? जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसेस में हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम लोगों ने क्या किया, to generate the customers demand, I set my prices at very lowest. पेनिट्रेशन में मैंने क्या किया, initially my prices will be very low. इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है और मार्केट सेट भी है. अगर उसे मुझे डिस्टर्ब करना है तो मुझे मेरे प्रोडक्ट की कीमती बहुत कम रखनी पड़े, बिकॉज कस्टमर इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विथ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. दैट वाज समथिंग अबाउट प्राइसिंग. क्या पेनिट्रेशन प्राइसिंग. अभी उसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा यानी इनिशियली माय प्राइसेस विल बी हायर. स्कीम करते हैं क्योंकि नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी to generate the market because nobody is there into the market right now. Nobody there into the market right now. So you have scope. कितना भी आप चार्ज करो, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है. Getting this? And इसलिए at initial level, at entry level, you will set higher prices. You will set higher prices, and once you set the higher prices, so whatever cost you have made, you will recover this cost within very few months. And once you have recovered your entire cost, then you will reduce the price gradually. Because after certain period of time, competitors may enter into the same business. At that time, what will happen? My competitor will manufacture this product and my competitor will sell this product at a less price. At that time, I will gradually decrease the prices. Getting this? This is the penetration prices. So can anybody give me the example of penetration prices? कोई इंडस्ट्री बताओगे क्या जहां पे पेनिट्रेशन प्राइसेस फॉलो हुआ? मैंने एग्जांपल दिया है कि पेनिट्रेशन प्राइसेस, सॉरी, प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, इनिशियली प्राइसेस बहुत हाई होते हैं और कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है. कस्टमर भी वो परचेस करेगा, उतना पैसा देगा जितना आपकी कंपनी चार्ज करेगी. और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार मेरे सारे कॉस्ट रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसके क्या करूंगा, प्राइसेस कम करूंगा. तब तक मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए रहेंगे. So can you give any real example into the market, such sector or such company उसने ये ओबे किया है? Yes, tell me fast. Just imagine. Sir, the launch of Kia Motors. Launch of Kia Motors. No. Kia Motors Indian Railway. prices कम थे प्रोडक्ट के, because they wanted to price penetration strategy उन्होंने follow किया. Yes, sir. I was giving the example of penetration only. Yes, by price penetration, it was very the suitable example of price penetration is the Kia Motors. I'm just asking about the price scheming policy.
यस Sir, Sir, I MI handsets. MI हैंडसेट, MI हैंडसेट में भी नहीं है। अब अभी देखिए, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है प्राइस स्कीमिंग में। sir iPhone. आईफोन, यस, आईफोन या एप्पल के जो फोन मार्केट में आए ना, means what, this same kind of policy, same kind of product was not available into the market. अगर कस्टमर को प्रोडक्ट लेना है तो मेरे ही पास आना पड़ेगा। अगर मुझे पता है तो मैं आई विल चार्ज एनी प्राइस। गेटिंग दिस? सेकंड एग्जांपल, don't give your comments into the chat box. You can just discuss with me. Yes, another example. Samsung, Sony, no. You can have some of the hospitality charges, hospitality services. Yeah, you can use the hospitality. Means what? Here, मेरे जो सर्विसेज है उसी टाइप के सर्विसेज कोई नहीं दे रहा है अभी। So let us take an example of electrical vehicles जो टाटा मोटर्स बना रहे हैं 4-व्हीलर सेक्टर में। गेटिंग दिस? उसके बाद सीएनजी के किट्स आए ना, सीएनजी पे जब गाड़ियां आई है ना, तब सीएनजी किट्स के रेट्स कितने थे और अभी कितने हैं। पेनिट्रेशन, सॉरी, इट इज अ काइंड ऑफ प्राइस स्कीमिंग। कोई नहीं बनाता है तो मैं बनाऊंगा और मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। I am taking the opportunities of manufacturing this kind of electric vehicles. That's why I will charge more. जब तक कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूंगा, स्कीम करूंगा। जो दूध के ऊपर जो साय होती है ना, साय पहले निकाल देंगे हम लोग, उसके बाद बाकी वाला दूध के साथ सारे लोग खेलेंगे। गेटिंग दिस? सो स्कीमिंग, स्कीमिंग यानी वरचा तरंग आपण काढून घेतोय। ओके, so let us take an example of electrical vehicles which are prepared, यानी 4-व्हीलर सेक्टर में अभी टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर is only one company which are preparing light electrical vehicles. तो जिनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना है उनके पास अभी ऑप्शन ही नहीं है, टाटा का ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। गेटिंग दिस? सो वॉट एवर प्राइस टाटा विल चार्ज इनिशियली, कस्टमर हैज टू पे। एक बार मारुति ने अभी अगर टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है तो उसका प्राइसेस फॉर एग्जांपल 7 या 8 लाख रुपए है लाइट व्हीकल का। गेटिंग दिस? अभी देखिए, जब मारुति सुजुकी उसी मार्केट में एंटर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कीमती 5 लाख तक आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज तब तक टाटा क्या करेगी, प्राइस स्कीमिंग करेगी। प्राइस स्कीमिंग यानी जितना पॉसिबल है एक्सप्लॉयटेशन करना, जितना पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना, जितने रेंज से प्रॉफिट कमाना उतना कमा के बैठे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, once competitor enters into the market, at that time what will happen, you don't have right or you don't have opportunity to set the higher prices। तब क्या हो जाएगा, जितना मार्केट का ट्रेंड बन जाएगा उतना ही प्रॉफिट में कमा लूंगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइस स्कीमिंग। तो प्राइस स्कीमिंग कब होती है, मार्केट में मेरे बिना कुछ अल्टरनेटिव नहीं। Getting this? That time we can use the policy of price scheming. As the demand for first customer is satisfied and competition enters into the market, then firm lowers the prices to attract the customers. उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, we will reduce the prices. Okay, it is used when new product enters into the market. नया product कुछ launch करते हैं and this kind of features, the features of this product are not similar to existing product. That time we can use this. The goal is to gather much revenue as possible when consumer demand is high. जब तक consumer का demand ज्यादा है तब तक हम लोग क्या करेंगे, penetrate करेंगे मार्केट को। पेनिट्रेशन करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम लोग, उसके प्राइसेस रिकवर करेंगे। फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ दिस पैंडेमिक, मास्क की कीमतें कितने थे,
₹50 से 6 ₹50 ₹100 को एक मास्क था, अभी मास्क की कीमत कितनी होगी? ₹10 ₹5 ₹15 गेटिंग दिस मीन्स व्हाट जब अपॉर्चुनिटी है तभी हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे। एक बार कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए तो मैं भी क्या करूंगा, मेरे प्राइसेस कम करूंगा। गेटिंग दिस तो वंस द गोल्स आर मेट, जितना भी मेरा प्रॉफिट का गोल था वो एक बार मेरा पूरा हो गया, एक बार मैंने फुलफिल किया तो क्या करेंगे, द ओरिजिनल प्रोडक्ट क्रिएटर कैन लोअर द प्राइस to attract the more cost conscious buyers while remaining competitor will toward the lower cost। एक बार मेरा प्रॉफिट का गोल अचीव हुआ तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मेरा सेल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल अप्लाई द डिस्काउंट, I will reduce the prices। Scheming can encourage the entry of competitors since other firm will notice the artificially high market। तो बाकी लोग क्या कर सोचेंगे, चलो भाई इसमें बहुत मार्केट है तो हम लोग भी उसी मार्केट में जाएंगे। So that automatically they will attract the competitors because you are the only one who are manufacturing such kind of products and you are generating huge market. That time there will be the quick entry of the competitors। Firms often use scheming to recover the cost of development। जो initial cost है वो as early as possible recover करने के लिए scheming policy use करते हैं। There are enough prospective customers willing to buy a product at higher prices क्योंकि मेरा कस्टमर का सेगमेंट ही अलग है, मेरा प्रोडक्ट का सेगमेंट ही अलग। गेटिंग दिस द हाई प्राइस डज नॉट अट्रैक्ट द कस्टमर। जब फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी तब उसके प्राइसेस कितने थे, सो देयर वाज मींस व्हाट देयर इज द ह्यूज डिमांड टू दैट प्रोडक्ट, so that whatever price I will charge, customer will pay the prices। Getting this? So this kind of unique features, unique qualities are there with respect to your product. That time it is possible to use the price scheming policy। Lowering the prices would have only minor effect on increasing the sale volume। Prices कम कर दिए means what, my customer is the stable, my sale volume is the stable। अगर प्राइसेस कम भी किए तो मेरा सेल उतना बढ़ने वाला नहीं है, ये भी हो सकता है। एंड हाई प्राइसेस आर इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ हाई क्वालिटी। BMW का प्रोडक्ट अच्छा ही होता है। गेटिंग दिस? सो वी विल कंपेयर द प्राइस विद क्वालिटी। वी विल मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस होते हैं और लाइफ टाइम भी रीजनेबल होते हैं। गेटिंग दिस? BMW, स्कोडा और योर वॉल्वो प्रोडक्ट अच्छे होते हैं इसलिए प्राइस भी बहुत होती है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ पर्सन। गेटिंग दिस? सो टू अंडरस्टैंड, बाय अंडरस्टैंडिंग this mindset you will decide the price scheming। So see here, this is the graph in which I have shown the price scheming। Okay, just see here, on x-axis I have taken the prices P1 and price P2, and towards this, on x-axis I have taken quantity to be sold, that is the quantity Q1 and quantity Q2। So by selling Q1 number of quantity, whatever is your price, the same you are going to achieve by exceeding your level of activity to Q2। जितना प्राइस कीमी, जितना प्राइस का टारगेट मेरा Q1 का था उतना ही टारगेट मैंने क्या किया, I have reduced the, if I want to reduce the prices from P1 to P2, at that time I have to increase my quantity as well। So my profit objective will be same, but the same profit objective you will receive by selling extra unit। अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा सेल आउट होने चाहिए। Otherwise I will not cut the prices, I will not cut the prices। So by cutting my prices, my number of units to be sold into the market, it must be increased। So your price scheming level will be remain as it is। Otherwise what will happen, you will lose your business। तो price scheming में क्या करना है, अगर मुझे price low रखनी है तब in that proportion my total number of quantity to be sold into the market will increase। That time price scheming is possible।
So, and what are the advantages? So, first is the perceived quality. Price scheming help to build up your own image, high quality products, Skoda, BMW, Fortuner, getting this, then Volvo products, whose prices are higher. It means that they are providing better quality than, means what, this product is not for normal person or normal customer. High quality means what, this is called as a customer identification and product identification. वो product उनके लिए है, मेरे लिए वो product है. Getting this? So it creates the identity of your product. Getting this? तो मारुति के प्रोडक्ट रीजनल होते हैं सब लोगों के लिए. उसके बाद BMW 100 अगर कस्टमर रहेगा तो 100, अगर इफ यू गो इनटू द ऑन द रोड, तो अगर 100 गाड़ी में से एक या दो गाड़ी या 10 गाड़ी स्कोडा स्कोडा का रहेगा या BMW का रहेगा, और मारुति का देखा अगर रोड पे तो कितने गाड़ियां रहेंगी, 100 में से 60-70 गाड़ियां मारुति की सुजुकी की. गेटिंग दिस? टाटा मोटर्स की 20-30 गाड़ियां रहेंगी और 10 गाड़ियां स्कोडा या ऐसे कुछ ब्रांड का रहेगी. मीन्स व्हाट, these brands are there who have created their brand identity. So with respect to this brand, if you want to purchase this brand, at that time I have to pay more. This is the mindset of the customers, and you are just creating this kind of mindset. So you, once you have created this mindset, then you can use the pricing of price scheme. Okay, next is the cost improvement. It helps firms to quickly recover its cost of the development. जो कुछ initial cost हम लोगों ने किया रहेगा, उसको recover करने के लिए we will use the price scheming policies. Then to decide the high profitability, to generate the high profit margin, you will use the price scheming. And vertical supply chain benefits means what, it helps distributors to earn the higher percentage. मैं price अगर बढ़ाऊंगा तो with respect to this, again I will give the more discounts and more incentives to my distributors, because my distributors are my supply, my channel partners are there who are helping me for the price scheme. Okay, so you will also use this. Let us take an example of Cotton King, or you have another brand such, okay, where this scheming policy will be applicable, because your product is different than others and you are going to scheme the market. Now next one is the last, is the transfer pricing. I think this is the last. Yes, अभी देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग होती है क्या. Just go through this slide first, then we will discuss. Transfer pricing is the last pricing strategy to decide your revenue. Done. Just gone through this slide. Yes, sir. Okay, now I will tell you one scenario. अगर let us take an example of Mahindra company. Okay, अभी महिंद्रा जब, अगर कोई भी या महिंद्रा प्रोड्यूसेस स्कॉर्पियो और बोलेरो, ठीक है, अगर ये गाड़ियां जहां पे बनती है तो इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स.
अगर एक गाड़ी बनाने तो उसमें कितने पार्ट्स होते, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पार्ट्स विल बी देयर, अराउंड 10,000 5,000 पार्ट्स होते हैं उसी गाड़ी बनाने के लिए। मीन्स व्हाट, ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा स्कॉर्पियो आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय its own plant. For example, Mahindra Scorpio is preparing, Mahindra Scorpio is assembling in the Nashik plant. महिंद्रा का जो नासिक का प्लांट है वहां पे उसका फाइनल असेंबली होता है। तो क्या ये महिंद्रा उसके 5,000 जो प्रोडक्ट लगते हैं सारा बनाने के लिए, टायर बनाने, टायर, उसके बाद मिरर, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद चासीज रहेगा, कुशन रहेगा, स्टीयरिंग व्हील रहेगी, उसके बाद अंदर वाला एसी रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पार्ट्स रहेंगे। तो ये सारे पार्ट्स क्या महिंद्रा खुद बनाता है क्या? यस, No, sir. नो, बिकॉज दे हैव हायर्ड सम अदर चैनल पार्टनर्स who will or they have hired some of the job workers। वो क्या करेंगे, एक एबीसी कंपनी को ऑर्डर देंगे, मुझे इतने मिरर्स चाहिए, मुझे इतने क्रैंकशाफ्ट चाहिए, मुझे इतने इंजन चाहिए, मुझे इतना सीट कवर्स चाहिए, सीट बेल्ट चाहिए, उसके बाद मुझे इतना ऑडियो रिकॉर्ड, ये आपका साउंड सिस्टम चाहिए, गेटिंग दिस, स्टीयरिंग व्हील चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट उनके खुद के नहीं बनते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, उसमें से जो मेन पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील रहेगा, इंजन रहेगा, कंपनी का चासी रहेगी, कंपनी का सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो मेन पार्ट होते हैं वो महिंद्रा खुद अपने प्लांट में बनते। क्या ये सारे प्लांट नासिक के महिंद्रा में बनते हैं क्या? सारे प्रोडक्ट के मेजर प्लांट नहीं बनते। So Mahindra has certain units or certain manufacturing unit. One is at Kane, one is at Panvel, one is at Chakan, one is at Nagpur, one is at Nashik. तो ऐसे अलग अलग जगह पे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो महिंद्रा का फाइनल असेंबली फॉर एग्जांपल मान लो कि नासिक में होता है, तो नासिक का जो प्लांट है वो क्या करेगा, महिंद्रा का चासी बनेगा, क्रैंकशाफ्ट बनेगा चाकन में। तो चाकन वाला महिंद्रा का प्लांट क्या करेगा, महिंद्रा के नासिक वाले प्लांट को क्रैंकशाफ्ट या इंजन ट्रांसफर करेगा। Getting this? So the plant which is set in the Chakan, this Mahindra plant A is sending the finished products of engine to the Mahindra plant at Nashik. Getting this? Abhi try to imagine the crankshaft which is prepared in the Chakan, this crankshaft or that engine is the plant of this Chakan can sell to the Mahindra Nashik as well as to the entire market. अभी चाकन का जो प्लांट है जहां पे इंजन बनता है, जहां पे क्रैंकशाफ्ट बनता है, वो क्रैंकशाफ्ट चाकन का महिंद्रा क्या करता है, दिस प्रोडक्ट कैन बी सेल इनटू द मार्केट। तो उसके नजदीक अगर दूसरा कोई चाकन में दूसरा प्लांट है, दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का, उनको भी बेच सकता है और वही प्रोडक्ट नासिक के महिंद्रा को भी स्कॉर्पियो डिवीजन को भी दे सकता है। इज इट क्लियर टू यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। समझ में आ गई ये बात? यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी देखिए, आई एम प्रोड्यूसिंग इंजन as a Mahindra brand. I am producing the engines. So how many engines I am producing? For example, 100 engines I am producing in a month. Out of this 100 engines, I have market demand of 50 engines to the Mahindra plant. मेरा जो नासिक का महिंद्रा का प्लांट है वो मुझे 50 का ऑर्डर उनको देना है हर मंथ, और बाकी वाले 50 इंजन आई हैव टू सेल इनटू द मार्केट। दूसरा कोई रहेगा कि फॉर एग्जांपल दूसरा कोई कंपनी रहेगा, फोर्स मोटर रहेगी, बजाज का टेम्पो रहेगा, so they can also purchase my engines। Getting this? अभी ये कंडीशन मेरे मार्केट के है। So I have the brand Mahindra. I can produce, I can supply the inputs to the Mahindra Scorpio as well as I can supply the inputs to the market। अभी जब एज अ ब्रांड, तो मैं, मेरा महिंद्रा ये ब्रांड है, एंड महिंद्रा ब्रांड को दूसरे महिंद्रा फैक्ट्री को, एक महिंद्रा फैक्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दूसरे महिंद्रा फैक्ट्री को एज अ इनपुट सेंड करती है, तो उसने कितना प्राइसेस
लेना चाहिए, बोथ आर द सेम, महिंद्रा ए एंड महिंद्रा बी। एंड वो महिंद्रा ए अगर मार्केट में, प्री मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके प्राइसेस क्या रहेंगे। और मैं मेरे भाई को, मेरा भाई कौन है, महिंद्रा बी इज माय ब्रदर, अगर महिंद्रा ए इज सेंडिंग द finished goods to Mahindra B, at that time what will be the price? And if Mahindra A is sending the product into the market, at that time what will be the price? Now if Mahindra A is sending a finished goods to Mahindra B, at that time whatever price will be charged by Mahindra A on Mahindra B, that price is called as a transfer price. This will be not your selling price, or this will be not equal to your selling price. जिस प्राइस को मैं मेरा प्रोडक्ट चाकन मार्केट में सेल करता हूँ, उसी प्राइस से मैं मेरा प्रोडक्ट मेरे महिंद्रा बी को नहीं सेल करूंगा, उतना ही प्राइस मैं नहीं दे दूंगा, बिकॉज महिंद्रा ए एंड महिंद्रा बी आर फ्रॉम वन ब्रांड. So whatever price I will be charging from Mahindra B as a Mahindra A company, that price will be called as a transfer price. Clear everybody? Yes? Yes, sir. हाँ, अभी देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग. अभी ट्रांसफर मीन्स व्हाट? Whenever you are sending material from one company to their subsidiaries या subsidiaries to the major company. अभी देख, मैंने बोला कि महिंद्रा का स्कॉर्पियो का असेंबली होता है फॉर एग्जांपल नासिक, दिस इज द मेजर कंपनी, दिस इज द मेन प्लांट. लेकिन मेरे सब्सिडरी प्लांट कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल चाकन में एक दूसरा सब्सिडरी यानी जो सब्सिडरी प्रोडक्ट उसको, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उसको देता है. गेटिंग दिस? सो एट दैट टाइम द amount or the product which you are sending from one company to other company which are under same roof, एक ही ब्रांड के अंडर वेरियस कंपनीज है, तो जो रेट से हम लोग एक दूसरे को प्रोडक्ट देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस. वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम one unit of the same company to the other unit of the same company. At that time, that trade or that transaction will be not called as a sale. तो उसके ट्रांजेक्शन को सेल नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम लोग एक ही ग्रुप के अंडर है. At that time, this transaction will be not called as a sale. That will be called as a transfer. That will be called as in accounting language, you will call it as a transfer. And see, I am having own independent unit and Mahindra Chakan is also having own independent. तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दे सकता ना उनको. चाकन प्लांट हैज सर्टेन एक्सपेंडिचर, गेटिंग दिस? तो वो मेरा भाई है, वो मेरा सब यूनिट है. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए. आई हैव टू आल्सो सर्वाइव, आई हैव टू मेक द एक्सपेंडिचर, सो एट लीस्ट आई हैव टू रिकवर दैट एक्सपेंडिचर एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड दिस ट्रांसफर प्राइस. कितना डिसाइड करना है, मैंने खर्चा कितना किया, मैंने खर्चा कितना किया है उसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके हिसाब से एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम महिंद्रा ए टू महिंद्रा बी, I have to at least recover the transfer prices, and that transfer prices is nothing but your total cost. Along with this total cost, you will charge little bit margin because मुझे भी survive होना है ना. Getting this? For that purpose, so whatever price will be decided, that is something about transfer price. Now look towards this theory. It is the price at which the related parties transact with each other. Okay, similar kind of companies such as during the trade of supplies or labor between the department. लेबर का ट्रेड रहेगा, लेबर का ट्रांसफर रहेगा या गुड्स का ट्रांसफर रहेगा. At that time, this transfer pricing will have to decide. Transfer prices may be used in the transactions between company and its subsidiaries, or between the divisions of the same company among different countries. या अलग अलग स्टेट में रह सकते हैं या अलग अलग कंट्रीज में रह सकते हैं. Where I am sending my raw material, where I am sending my finished goods to as a input to the that particular subsidiary. And we both, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही है, मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस और उसी महिंद्रा बी का कॉर्पोरेट ऑफिस एक ही है. गेटिंग दिस? मीन्स व्हाट? हियर
सम ऑफ द रिसोर्सेस आर यूटिलाइज कॉमनली। इसलिए जो रिसोर्सेस कॉमनली यूज करते हैं उसका चार्ज तो मैं नहीं लूंगा उनसे। जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस हम लोग यहाँ पे मेरे कंपनी में यूटिलाइज करते हैं उतना ही कॉस्ट में रिकवर। जो कारपोरेट ऑफिस के एक्सपेंसेस है वो तो मैं रिकवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी उनके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम। Getting this? So in this way, I will adjust my price because I am transferring material. I am not selling the material. अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कुछ मटेरियल जाता है तो उसको हम लोग सेल नहीं बोल सकते, बिकॉज आवर ओनर इज सेम। आवर ओनर इज सेम, इसलिए उसको उसी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर बोलते हैं। एंड दिस ट्रांसफर विल बी नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी मेरे रिकवरी करना है ना, मुझे मेरे कुछ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना है। मुझे भी इस बिजनेस में सर्वाइव होना है, इसलिए मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। सो द ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट विल, आई कांट एक्सप्लॉइट माय कंपनी। मैं ज्यादा प्राइस नहीं लूंगा उसी कंपनी से, क्योंकि मैंने अगर उसी कंपनी से दूसरे कंपनी से ज्यादा बी से अगर ज्यादा प्राइस चार्ज किया तो क्या हो जाएगा, उनका लॉस हो जाएगा। उनका लॉस यानी एज अ ग्रुप टोटल ग्रुप का लॉस हो जाएगा। आई कांट एक्सप्लॉइट माय सब्सिडरीज, आई कांट एक्सप्लॉइट टू माय ब्रदर्स, आई कांट एक्सप्लॉइट टू माय सिस्टर कंपनीज। Getting this? I can't charge huge products, huge prices. A transfer prices arises for accounting purpose. Getting, because this will be not your sale. Okay. I think we have finished our time now. You have another lecture ना? दूसरे No, lecture sir. आहे का लगेच? नहीं है सर. नहीं है. So can नहीं. we extend for 2-3 minutes more? Yes, sir. Yes, sir. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अकाउंटिंग पर्पज में जो कुछ मैं माल एक दूसरी कंपनी से दूसरे कंपनी को भेजूंगा तो उसका अकाउंटिंग एंट्री तो होना चाहिए, उसका जर्नल में एंट्री होना चाहिए, लेजर में होना चाहिए, सेल्स बुक में होना चाहिए। जो कुछ मैं खर्चा करूंगा उसकी एंट्री होना चाहिए। दैट टाइम दिस विल बी योर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू मेंटेन। Okay, now whenever you are going to make the entry, at that time there will be some consideration. अगर कंपनी ए से कंपनी बी को माल गया तो उसका कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए ना। फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एवरी टाइम ना। गेटिंग इट? At that time there should be some consideration, and that consideration is nothing but your transfer price. Because without money I will be not sending my product. When these related parties are required to transact with each other, the transfer price is used to determine this cost. रिलेटेड पार्टी एक दूसरे को माल अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितने भी रहेगी, दैट इज समथिंग अबाउट योर मार्केट प्राइस। ओके, तो ट्रांसफर प्राइसेस जनरली डू नॉट डिफर मच फ्रॉम मार्केट प्राइस। यानी जो ओपन मार्केट में फॉर एग्जांपल महिंद्रा का क्रैंकशाफ्ट अगर मैं भारत फोर्ज को बेचूंगा तो उसका कीमत है 5000 रुपीज। तो वही क्रैंकशाफ्ट अगर मेरा महिंद्रा बी को बेचूंगा तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन योर जो प्राइस से जो कॉस्ट से मैं भारत फोर्ज को 5000 को बेचता हूँ तो मेरा महिंद्रा के बी प्लांट को कितने को बेचूंगा, approximate near to 5000 or less than that. I can't charge more than this 5000. Getting this? तो उसमें क्या है, मैं जो कॉमन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो मैं एक्सक्लूड करके आई विल सेट द प्राइस ऑफ 4500। ओपन मार्केट में 5000 को बेचता हूँ, मेरे सिस्टम पर्सन को 4500 को मैं सेल आउट करूंगा या ट्रांसफर करूंगा। गेटिंग दिस? So if the price does differ than one of the entities, it is the disadvantage and would be ultimately start buying from the market and got better price. इसका मतलब क्या है, my price will be approximate to market price। जो भारत फोर्ज को अगर मैं 5000 को बेचता हूँ तो मेरे सब्सिडरी को 4900 4800 को मैं सेल आउट करूँ। गेटिंग दिस? Price will be not more than this, but it will be less, but it will be not that much less as well. मेरा ज्यादा भी मैं लॉस करके नहीं ट्रांसफर करूंगा। I have also bear my expenses। Getting this? This was something about transfer price। ट्रांसफर प्राइसिंग यानी इन शॉर्ट में क्या है, अगर मैं मेरा प्रोडक्ट्स मेरे सिस्टम पर्सन को अगर सेंड करता हूँ ट्रांसफर करता हूँ, एट दैट टाइम व्हाटएवर प्राइस आई विल चार्ज, दैट प्राइस
ट्रांसफर प्राइस। दिस प्राइस क्या होती है, मार्केट से कम होती है या मार्केट से इक्वल भी होती है, लेकिन मार्केट से ऊपर नहीं होगा। ओपन मार्केट में जितनी भी प्राइस है उतना हो सकती है, उससे नीचे हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। Getting this? These are the some of the pricing strategies. So we have studied 6 pricing strategy as of now. So transfer pricing, then price scheming, then we have seen the price leadership, then price penetration, cyclical pricing, marginal pricing, and last one was the full cost pricing. So this was pricing strategy. So let us stop here. Tomorrow we will see the remaining part. Thank you so much. Thank you, sir.